Goyalji. So now we have the people from different area. One is representing the institution, academic institute, the Dr. Gaikwad, and another is again, earlier he had experience in the material division, what we can say, he was leading renowned ink industry, and after that I'm so happy because almost decade before we had introduction 2017, 7-8 years before, then that time he mentioned his interest and love towards sustainability, and therefore he established and is a founder, CEO of Sustain Mantra. So that shows his in-depth interest and concern about the sustainability and Indian flavor at global level. And I hope all you agree with me. The packaging, the mantra you have taken, and that that with the help of packaging, with the help of good barrier packaging material, initially they have used for their product, and significantly enhance the shelf life of traditional savory, especially snacks food item, and the way you preserve the flavor, Indian essence and flavor with good barrier properties. But by the same time, your responsibility was that today scenario how to implement the sustainability in their business. Shaping 3-4 factors that we need to focus. First, which is academia. Academia, by the way, is no more just the learning the courses, but it is now involved in the R&D as well. Then what we do, the R&D, that is also implemented by the industry. That is second part. And third one is the consumer. At the end of, they are the end user. So we need to understand whatever the sustainability or the future scope we are talking about. At the end of the consumer should understand. And when we talk about the consumer, the only sustainable packaging, the key word which is tremendously using by the marketing guys, that should not be only on the stages or somewhere else. It should be implemented, and that should be like cost cutting or what we call the low cost sustainable option. So as a part of academia, I'm from the IIT Roorkee, so it is very important to understand the effect of the sustainability on our future generation, and like whatever the government of India even spending huge money on the biopolymers or the sustainable things, and that is also implemented in the packaging industry. Now, industry representative definitely. So all three together playing an important role to formulate any standard. To share. Thank you very much. First of all, I extend my warm thanks to Pack Plus for inviting us here and sharing our views, and my colleague from IIT, non-name the technology, and they are the guiding factor all the time to the entire industry, because without them we cannot do anything. They are the eye opener for us, and they show us the path also how to and where to go about it. The question before us has been for the years together. Today, entire thing is the consumer centric. Whatever industry may be there, consumer is the boss. Right? Those are the days when there used to be license and there used to be queue for the consumer to buy the product. Now everything is the consumer centric. Pre-COVID and post-COVID era we have seen, and it has become very demanding also from the health and the concern side of it. Coming directly to the food business where Bikanerwala operates, we have got two types of the business segment. One is the packed food, that is namkeen, savory and all that.
which is a shelf-life product we say it to be. The shelf life may be from 30 days to 6 months or a year and so. And secondly, the fresh food which we serve through our restaurant under the banner Bikaneer. We made a very humble beginning in the year 1950 from Delhi. Now today, with the good wishes of the consumer and their demand, we have gone across the globe. Of late, we have set up our first outlet in London, UK. Prior to that, we are in USA, Canada, Australia. We are going to open Germany. We are going to there, Singapore already we are there. There are so many countries. And in another 5 years, we'll be able to take our food to all the consumers across the globe. Waiting him and Mr. Shailendra Singh ji. Earlier he had experience in the one of the important integral part of printing. Average pack size is much smaller. So when you're packing in information on a small pack, most consumer products, fast moving, eatable items, they are pegged at 10 rupees. That's sort of the break-even point where mass adoption of that particular product will take place. How much information do you pack there? Second, most information has been mandated by government or by regulation. I'm not sure how much of voice of customer has been done. What does the customer like to see on the packaging? And I know I like to conclude with an example. A large beverage company is pure sustainable. It's a journey, it's a way of thinking, it's a way of factoring not just your consumer and your profit and loss, but also people who are associated with it and also the environment. So this is a new way of thinking which most brands, whether in India or globally, are struggling with. The most And inputs. Ladies and gentlemen, and any questions, Divya? But with a lot of important inputs. अच्छा लग रहा है जो पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए एग्जीबिशन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है जिसमें पैकेजिंग इंडस्ट्री को एक मौका मिलता है जो अपने प्रोडक्ट को जो कुछ सालों में जो रिसेंट टाइम में इनोवेट करते हैं लोगों के सामने अनाउंस करने का डिस्प्ले करने का मौका मिलता है फैक्टर्स है हर साल प्रदान करके कॉन्फ्रेंस है इसमें लोग पैकेजिंग के बारे में इनोवेशन की जानकारी देते हैं खासकर टीम है पूरे देश की जिंदगी के हर शोबे में पैकेजिंग सस्टेनेबिलिटी वर्ड का बड़ा रोल होता है तो क्यों पैकेजिंग होता रहे बिकॉज पैकेजिंग जो बात करते हैं वो इंटीग्रेटेड पार्ट है फूड सप्लाई चेन सिस्टम का लॉजिस्टिक का एंड कोई प्रोडक्ट बिना पैकेजिंग के नहीं सकता तो इसके बाद जो कंज्यूमर यूज़ करके जो वेस्ट हुए उसको कैसे मैनेज किया जाए उस कंज्यूमर वेस्ट मैनेजमेंट और सॉल्यूशन है दूसरा है जो पैकेजिंग मेथड है उसका रिसाइकलिंग करके कैसे सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट बनाया जाए एंड व्हाट आर द इनोवेशन टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके माध्यम से उसको के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो और फिर दूसरे टूल हो ऑटोमेशन है रोबोटिक्स है रोबोट्स हैं इन टूल के माध्यम से पैकेजिंग को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए कैसे कॉस्ट कम किया जाए अगर ओवरऑल प्रोडक्शन मास वॉल्यूम कम होगा प्रोडक्ट की पैकेजिंग मटेरियल का कॉस्ट भी कम होगी कार्बन फुटप्रिंट कम होगी अप्रोच है ये आर्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी के माध्यम फैक्टर्स ऑफ रिडक्शन रीयूज रिसाइक्लिंग पूरा मैं चाहूँगा कि जो मंत्रा है मोर फॉर लेस यानी मैं प्रोडक्ट की लॉन्जिविटी बढ़ाए लेकिन कम से कम ऑप्टिमाइज सस्टेनेबल पैकेजिंग मेथड का यूज ये आपको आपके माध्यम से और खास के जो मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि पहली बार जो भारतीय पैकेजिंग संस्थान है
भारत सरकार की उपयोग मंत्रालय के अंदर है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टीम है। हम लोगों ने पैकेजिंग इंडस्ट्री में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन का स्टार्टअप सेंटर जिसमें से अभी तक 7 लोगों ने ज्वाइन किया है, आने वाले दिन में और इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे। और खास के अभी जो ट्रेंड मैंने देखा है जो सिस्टम जो हमारे साथ स्टार्टअप जुड़े हैं एंड उनका फोकस एरिया बायोडिवर्सिटी, सस्टेनेबिलिटी, यूटिलाइजेशन एग्रीकल्चर जैसे पैकेजिंग बनाना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे पैकेजिंग सॉल्यूशन अच्छी पैकेजिंग का होना जरूरी है। अच्छी पैकेजिंग हमें जानना पड़ेगा कि उस कंट्री का कंप्लायंसेस क्या है ना, कि उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट को पैक करें। तो IIP जैसे संस्था हम यही काम करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपकी सही पैकेजिंग कैसे हो, सुटेबल पैकेजिंग कैसे हो और उस कंट्री का रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है उसके हिसाब से आपका ट्रांसपोर्ट वर्डिनेस पैकेजिंग मेथड क्या हो, ये काम करते हैं। आपने के बाद क्या सरकार ने बहुत अच्छा कदम किया, बहुत अच्छी उनके बाद सरकार ने बहुत बड़े TP पे साइन किया है ना, इससे बिजनेस बढ़ेगा। और मैं तो पैकेजिंग के बारे में ये कहूँगा कि जब प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा तो पैकेजिंग उसके साथ जाएगा, पैकेजिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी और उस कंट्री का कंप्लायंस सस्टेनेबिलिटी है, पैकेजिंग मटेरियल का डिमांड उसके कंप्लायंस से रेगुलेशन बढ़ेगा। बड़ा अच्छा अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया उसका कुछ फर्क पड़ेगा कि हमारे 30% क्योंकि हम इसलिए सबसे ज़्यादा पैकेज द्वारा मारते हैं। हमारा परव्यू से बाहर है, हम इसकी बात नहीं करेंगे इसलिए हम थैंक यू। I'm the country head for Reed Exhibitions in India. Reed Exhibitions वर्ल्ड की सबसे बड़ी B2B exhibition company है। And of course Factless ये 19th edition है। Factless का इंडिया में कलेक्ट हो रहा है। And as you can see the energy and the kind of participation from domestic India, international, tier 1, tier 2, tier 3. पैकेजिंग आप बढ़ते जा रहे हैं तो पैकेजिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ क्या देखते हैं ऐसे अगर स्कोप अगर ड्यूटी पे रहते हैं? Packaging is in our day-to-day life. Morning उठने से रात के सोने तक all the products that you are engaging with has some element of packaging, right? Packaging year on year बहुत ज़्यादा important इसलिए भी होती जा रही है कि more sustainable, less carbon footprint, more durable, cheaper. So packaging industry में even though the industry is doing a double-digit kind of growth level, it is very very important कि नई नई टेक्नोलॉजीज आएँ ताकि हमारी पैकेजिंग ज़्यादा ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बने, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बने, more attractive बने. So packaging as an industry is cutting through all sectors and it is growing and touching all lives, us as individual consumers and even as individual